राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने आर्टिस्ट जीजी स्कारिया। जीजी मोहन स्कारिया पेंटर, स्कल्प्टर और एक जाने माने वीडियो आर्टिस्ट। जीजी स्कारिया का जन्म 1973 में हरियाली से भरे राज्य केरल के एक छोटे से गांव कोटनूर में हुआ। बचपन में पेंसिल और मिट्टी से ही चित्र बनाने की कोशिश करने वाले जीजी स्कारिया ने आगे चलकर कला की दुनिया में ही अपना करियर बनाया। आज जीजी स्कारिया विजुअल्स की दुनिया की एक अलग विधा वीडियो आर्ट के चितेरे हैं और इस कला के जरिए दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाकर एक अद्भुत अनुभव की छाप छोड़ते हैं। विजुअल्स के जरिए संप्रेषण करने वाली इस नायाब कला पर आइए डालते हैं एक नजर, जिसे देखकर दर्शक हो जाते हैं मंत्रमुग्ध। तकरीबन 22 वर्षों से कला में सक्रिय जीजी स्कारिया ने देश विदेश में घूम घूम कर अपनी कला का जादू बिखेरा है। बहुत बहुत स्वागत है जीजी प्रोग्राम में। थैंक यू। हमको बताइए कि जब आपने ये सोचा होगा कि आर्ट आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है, तब से अब तक क्या क्या ऐसे बदलाव आ गए कि जिन आर्ट फॉर्म से आपने शुरू किया होगा, जिस मीडियम से शुरू किया होगा, उससे बदलते बदलते किसी एक दूसरे आर्ट फॉर्म को आपने बिल्कुल अपना एक्सप्रेशन का मीडियम बना लिया होगा? तो एक बहुत लंबा सफ़र है। आई वुड से दैट इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड शुरू से ही बचपन से मेरा इंटरेस्ट आर्ट में था। जैसे मेरे को एक पेंसिल और एक उस टाइम वो जो क्ले का भी पेंसिल होते थे, स्लेट होते थे, तो जब तक मैं आई कुड होल्ड दैट ऑन माय हैंड, तब से मैं यही करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब उतना ही पीछे से ही मेरा इंटरेस्ट था। और जब मैं मेरा जो बचपन केरल में एक कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में कोदनल्लूर एक जगह है, एक स्मॉल गांव है, तो वहाँ से हुआ था। तो वहाँ पे जो मेरा ऑलमोस्ट 17 ईयर्स आई स्पेंट इन दैट प्लेस। जब हमारा वहाँ पे पैडी फील्ड होते हैं, जैसे स्कूल से मैं आता हूँ तो सीधे मैं जाके मिट्टी लेके आते हैं घर बाहर से, तो उससे कुछ बनाना शुरू कर लेते थे। देन ऑल्सो स्टार्टेड ड्राइंग। जो शुरुआत में तो ऐसे था जैसे वैसे तो उस टाइम का एक बहुत इम्पोर्टेंट लिटरेरी मैगज़ीन कॉल्ड भाषा पोषणी विच इज़ स्टिल देयर इन केरला। तो उसका जो एडिशन उसमें आते थे मैगज़ीन्स में, बैक साइड में एक बैक कवर ऑलवेज एक यूरोपियन पेंटिंग होता था, जैसे रम्ब्रान का हो, माइकलांजेलो का हो या पिकासो का हो, ऐसे अलग अलग ग्रेट मास्टर्स का पेंटिंग उसके बैक साइड में आता था। तो जब भी मेरे को ये मिलते थे, मैं उसको देख के उसको बनाना शुरू कर लेते थे। सो दैट वाज जस्ट अ स्टार्टिंग। तो देन सो विच मीन्स आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आर्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जस्ट टू से। देन आई वेंट टू I mean, those days there was no +2, there was pre-degree course, which after 10th you go to directly to a college for your pre-degree course, 2 years. So after pre-degree, I went to College of Fine Arts, Trivandrum, where I went for the bachelor's degree in painting. So I did my painting degree, and so मेरा interest लगा था साथ साथ painting और sculpture का, and also film I was quite keen on. बट एक ही टाइम एक चीज़ में ही कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था, इसलिए तो आई ऑप्टेड पेंटिंग व्हेन आई वाज इन ट्रिवांड्रम कॉलेज। तो 95 में मेरा कॉलेज का पास आउट हुआ मैंने वहाँ से। then there was no MFA degree course in Kerala, and mostly people would go out of Kerala in order to
experience the other part also, because you know what happens in Kerala, once you stuck in that place, it's not about anything wrong with the place, it's also about, you know, you have your own comfort zone where you are kind of settled. So we always think that, you know, because we are also geographically, if you look at it, and when you go out, meaning you are going to more towards the center of the big country which we have, and it's also different levels of experience you know over a period of time you earn when you travel. So I always wanted to go out. So and during the time जब हमें BFA में Trivandrum में था, the third year we had a all India tour which took almost like 1 month program. Will be moving all over by train. तो उस टाइम में दिल्ली में भी आया था, तो मेरे को somehow I liked Delhi. So it's very unlikely. We went to Bombay also, other cities also, and we know that artists always need a city's backup in order to grow. As a matter of fact, because we don't have a place to show galleries and things like that, it only can happen in big cities. So Bombay might have been more close, you know, if you consider Kerala's climatic condition. But somehow I find quite interested when I was in Delhi. So I was from the beginning very keen to come to study in Delhi. So फिर मैंने दिल्ली, I also went to Baroda for first soon after my graduation. So I didn't get admission. Then I took the train to Delhi, and दिल्ली में पहले जो मंडी हाउस में एक ललित कला गेस्ट हाउस है, वहाँ पे रहा 1 हफ्ता. तो देन उस साल तो मैं अप्लाई नहीं कर पाता, बिकॉज मेरा जो मार्कशीट उस टाइम नहीं अवेलेबल था, दैट आई हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो देन आई अप्लाइड नेक्स्ट ईयर इन जामिया मिलिया एंड दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट. देन आई गोट इन जामिया मिलिया. सो आई डिड माई मास्टर डिग्री फ्रॉम जामिया मिलिया. सो दैट ड्यूरिंग दैट टाइम इन जामिया I was actually also expanding whatever I was doing in Trivandrum, because एक तो कला का तो चर्चा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, because when we start talking about it, it is also about you know what all the focus you keep, and you know there are also so many different levels of isms involved. जैसे practice में जैसे एक्सप्रेशनिज्म है, जैसे अब्स्ट्रैक्शन है, एंड ऑल्सो फिगरेशन है. अलग अलग तरीका का जो एक्सप्रेशन को तो हमने अलग अलग तरीका का नाम दिया हुआ है. तो दैट इज़ ऑल्सो वेस्टर्न प्रैक्टिस विच वी नॉर्मली फॉलो, वेस्टर्न हिस्ट्री एंड आर्ट हिस्ट्री विच व्हेन वी जॉइन इन अ कॉलेज लाइक दैट. तो उससे तो फिर हमें बहुत सारे कुछ देखने के लिए मिलते हैं. बहुत प्लेट्स है जो मास्टर्स का जो एंड बुक्स है बहुत सारे पढ़ने के लिए मिलते हैं. देन उसके थ्रू हम और अपना भी एक ये है. तो आर्ट ऐसे एक चीज़ है जिसमें अगर ऐसे नहीं है तो आपको एक काम बाहर से कोई दे रहा है तो उसी के ऊपर आप काम करोगे. एंड ये तो कुछ आफ्टर योर कॉलेज स्टडीज़ ऑल्सो, बिकॉज कॉलेज में स्टडीज़ में एक सेक्शंस होते हैं अलग अलग, जैसे कॉम्पोजिशन है, जैसे लाइफ स्टडी है, जैसे मॉडल स्टडी है, पोर्ट्रेट्स है. ये सब तो लोगों को देखे बनाते हैं या. एंड देयर इज़ वन सेक्शन कॉल्ड कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन में जो अपना जो भी मन में आता है उसके बारे में आपको सोचना है, उसको एक्सप्रेस करना है. दैट इज़ हाउ कॉम्पोजिशन वर्क्स. तो व्हेन यू आर इन अ स्टडी पीरियड you will obviously get lots of inputs from your colleagues and classmates and all sort of other resources. जब once you are out, वो कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है जिसके थ्रू आप आगे आपका करियर परस्यू करो या आपका मन में जो आता है उसको कैसे परस्यू करो. तो ये these are very difficult things to kind of pursue after you come out of a college system. So this is something which was very difficult for every artist, those who actually make their career. That's a वो एक दो शब्द में तो हम उसका जो क्या है वो तो बता नहीं सकता, बिकॉज उसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे भी होते हैं. समटाइम्स यू गेट अ जॉब समवेयर, देन यू कैन स्टक देयर, देन ऑलवेज यू हैव अ फीलिंग दैट मेरे को इसमें से बाहर निकलना है, अपना कुछ काम करना है. लेकिन वो अपना काम क्या है वो भी साथ साथ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो क्लैरिटी हमारे अंदर
साथ साथ नहीं हो रहे तो फिर ये जो काम आपको मिल रहे उसी में आप संतुष्ट हो जाओगे. दिस इज समथिंग विच इज सो ये इसमें थोड़ा वो जो it is tough to difficult to narrate how one kind of travel through this, because it is not only a monetary success story of a person, it is also emotionally as well as intellectual ability of a person, how one pursue what one wants to do and also to show, because you also have एक नज़रिया होता है उसको थोड़ा एक्सप्रेस करने का एक कोशिश रहता है. वो बाकी सब बहुत कुछ किया होगा वो भी हमारे सामने है, बिकॉज हार्ट हिस्ट्री और कोई भी चीज़ का हिस्ट्री तो रहते हैं हमारे साथ, तो वो हिस्ट्री से हटके कैसे करेंगे. एंड जो भी हमने किया है तो पुराने पहले से ये तो ऑलरेडी कर चुका है, इससे अच्छे जैसे हम सोच रहे हैं उसी बेटर लेवल पे लोग वो किया हुआ है. तो इन सच सिचुएशन में हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. दिस हैज़ ऑलवेज बीन अ टास्क फॉर एवरी आर्टिस्ट हु इज़ थिंकिंग एंड हु इज़ रियली परस्यू देयर करियर फर्दर. आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब तक आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो बहुत सारे जो आपका पीयर ग्रुप है, टीचर्स हैं, कलीग्स हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर होती हैं और वो एक काम की तरह आगे बढ़ता जाता है. लेकिन अगर काम से अलग ये सोचें कि धीरे धीरे जब आप ग्रो करते हैं और सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक आर्टिस्ट के तौर पर आपको भी अपनी कोई बात कहनी होती है. ये जो कहनी होती है जो बात, आपको अपनी कौन सी बात कहनी थी अपने आर्ट एक्टिविटीज़ से, आर्ट में एक्सप्रेशन के जो टूल्स थे आपके पास, वो कौन सी बात आप कहने की कोशिश कर रहे थे, जिस कोशिश में आपने जो ट्रेडिशनल कैनवस, ब्रश या स्केचेस या जो भी ट्रेडिशनल डिवाइसेस हैं उनसे बाहर निकलने की शुरुआत की होगी, जो कि बाद में जाकर इंस्टॉलेशन में या वीडियो आर्ट में, जिसकी बात हम अभी आगे करने वाले हैं, उसमें फिर पहुंचा होगा. यानी कि क्या उस मीडियम की, जो ट्रेडिशनल मीडियम है, उसकी कोई लिमिटेशन सामने आई जिसकी वजह से आपको कोई बात कहनी थी. ये एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी टफ टू टैकल. एक तो अगर मैं कहूँ कोई भी एक मीडियम ट्रेडिशनल नहीं है, बिकॉज जो ट्रेडिशनल आप इसलिए बोलते हैं तो आप यूज़ करके उसका तो उसके पीछे कोई थिंकिंग नहीं है. जो आपके सामने आ गया तो आप उसी तरीक़े से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. देयर इज़ नो अदर वे टू यूज़ इट. बट मेरे हिसाब से तो पेंटिंग, स्कल्पचर, जो भी जो अदर आर्ट फॉर्म्स है, विच इज़ ऑल्सो आई स्टिल डू पेंट, तो इन सब का जो पावर है, उन सब का एक क्या कहते हैं, एक एबिलिटी टू एक्सप्रेस है. उसमें कोई वो नहीं है तो मैं इसलिए नहीं हूँ तो उसी के थ्रू मैं नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, ऐसे नहीं है. इसमें मेरे को लगता है, बट इट ऑल्सो वी नीड टू थिंक अबाउट द टाइम इन विच वी लिव. उस टाइम का कुछ इम्पोर्टेंस है, और things which are moving in so fast and ways in which we receive information, ये सबको देखते हुए, एंड मेरा शुरुआत से दिल्ली में आके मेरा एक चीज़ बहुत वो था, बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट द सिटी एंड आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक कॉन्फ्रंटिंग द सिटी. तो वो कन्फ्रंटेशन वॉज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग, I mean I was almost taken aback, as well as I was also looking at it as in a very different way, because मेरे को ये stark contrast society का जो दिल्ली में महसूस हुआ है. तो because I am coming from a small city or small village, from there I am coming to a big city, तो वो difference was very huge for me. And जो मेरा जो हमेशा मेरा मन में क्या था, जो because I was trained or traditionally because brought up in a probably a Christian family background. I used to go to church. I used to have catechism classes almost 10 years of my life, and I had the kind of a very oriented, and my parents were like very staunch believers. So वहाँ से मेरा लड़ाई शुरू था, in the sense I just wanted to come out of that mode, and because then I realized that it's not only Christianity which exists. There are also so many other. I mean, when I was 13 years of age, then I went to my small village library, and I got myself a membership there and started taking books from there. So ever since
I was looking at different things, because otherwise I was only getting a one perspective, which was for me. I knew that there are also other perspectives exist, which probably can make a way out to see many other things. It's not just only one. I mean, I'm certainly now talking about the religious terms, but then religious term के साथ साथ हमारा बाकी बहुत कुछ attached है. तो when I in college, when I was because college was in a different city, it was in Trivandrum. That too was the first experience for me to go out of my home to another place in a hostel situation and stayed there for 4 years. So that was a major kind of major earth moving situation for me, because I kind of interacted with many people from different walks of life, and that actually kind of filled me with a lot of fresh perspective. So which means, what I'm trying to say, it's also very, I was quite interested in philosophy, and also I was quite keen on literature and fiction writing as well as films. So all these elements of different mediums, which was very much embedded in my approach. तो उसमें तो मुझे लगा तो ये पेंटिंग एक माध्यम है जिसमें तो आपका जो हम जो नॉर्मली कहते हैं 2D एक्सप्रेशन, इट्स इन अ वे इट्स 2 डायमेंशनल, फ्लैट है उसका सरफेस, उसमें जो आप जो मर्जी करो उसको आप 3D बनाओ. 3D in the sense, not just only in the sense of looking at 3D object, it's also in terms of your ideas and your emotions and your other aspects of it. तो ये जो सारे ऐसे जो अलग अलग streams of thoughts मेरे अंदर था about life in general and about probably loneliness, about also when I come to Delhi, it was more about social systems, how people coexist in a place like Delhi, because Delhi में हमें तो एक पूरा इंडिया का एक माइक्रोकॉस्म दिखाई देता है. इसमें सब जगह से लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, एंड अगर यहाँ पे हिंदी नहीं भी आता है लोगों को, तो यहाँ पे पूरा ज़िंदगी यहाँ पे विदाउट स्पीकिंग हिंदी वन कैन लिव इन दिस सिटी. In any regional language can be talked and live in. So we have a very different existence as a living in a city structure and urban spaces. So I was quite keen and interested in how these urban spaces are reflecting different parts of India. At the same time, it has its own characteristic. That character was something which kind of drove me in, and which my own interest of human existence and social psyche and religious dogmas or way of living, and as well as the architectural structures in which we contribute and we live. तो ये सारे एरियाज में मेरा इंटरेस्ट था शुरू से. तो उसमें मैं क्या ढूंढ रहा हूँ अगर ऐसे पूछा जाए तो आई वुड से, अगर एट दिस मोमेंट आई कैन से, मैं तो ऐसे एक परिस्थिति में देख रहा हूँ, उसको मैं बहुत डिटेल में ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, उससे थोड़ा बाहर हटके भी उसको देखना चाहता हूँ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर फोकसिंग इन एंड आउट ऑफ योर ओन प्रॉब्ली बॉडी, योर ओन सिस्टम. सपोज अगर मैं अपना बॉडी कोई सिटी के नज़रिया में देखना शुरू करूं, तो यू कैन काइंड ऑफ फोकस इन एरियाज वेयर यू कैन से दैट यू हैव सम पेन, some body parts is getting hurt, and some areas you are getting pleasure. So and where are that these areas are located, तो आप उसको कन्वर्ट करो अपना सिटी के तरफ, तो शहर में ये सब होता है. So these are the areas in which my interest focused, and तो उसमें तो it is not just only one artistic expression. इसमें बहुत सारे जो मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे लिटरेचर का जो इंस्पिरेशंस हैं, बहुत सारे फिलोसफिकल अप्रोचेस का अंडरस्टैंडिंग है, जो अलग अलग जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग जो अलग अलग फिलोसफर्स ने बोला हुआ है, वो अलग अलग टाइम में कैसे सिटी को देखा है या
ह्यूमन बीइंग्स को देखा है, और इवन द अभी जो now that more important thing is about the way in which the different rights are being coming into focus, because there used to be only human being. अभी तो हम ये भी सोचते हैं एनिमल भी हमारा लाइफ का हिस्सा था, तो हमने तो उसको बिल्कुल अलग कर दिया है. and the women's right and Dalits, so all these areas of different sections, मैं इन सब में मेरा इंटरेस्ट है, तो इन सब में से मैं इंस्पायर होता हूँ. एंड सो in that sense it is all about, you are talking about the present, the time in which you live, and how you interact with this time, and how much you contribute or how much you take that from that in order to build your own understanding about that particular time in which you live. तो अब यही इन्हीं सब बातों की रोशनी में अगर हम आपके किए हुए ख़ासतौर पर वीडियो आर्ट पर, जो आपके पास जो कन्वेंशनल मीडियम में जो किया हुआ काम है वो उसका तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उस पर अभी नहीं जाते हैं. फ़िलहाल हम आपके वीडियो आर्ट पर, जिसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उस पर बात करेंगे. तो एक एक करके शुरू करते हैं. कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? हम समझते हैं कि जो आपने हमको कुछ दिखाया था उसमें से ही जो 3-4 चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक को आप चाहें तो ऑर्डर में सबसे पहले रख सकते हैं, और वहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर हम जो गांधी और माओ त्से तुंग, जिनकी बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल लगभग विपरीत विचारधाराएं और प्रैक्टिस हैं, उनको मिलाकर आपने एक वीडियो आर्ट क्रिएट किया, उसके बारे में बताइए. तो ये मेरे ख्याल से 2010 में किया था ये काम. ये इसका जो एक इनविटेशन था, एक्चुअली चैतन्य साम्रानी का के क्यूरेटर है, उसने एक चाइनीज़ क्यूरेटर के साथ काम किया. तो invitation, the idea was to have an interaction between a set of Chinese artists and set of Indian artists. So I was one of them. So we went to China and they came to India. That is how the whole process began. तो उसमें तो मैंने गांधी जी का बहुत सारे मैंने उनके ऊपर काम किया हुआ है इन अलग different times. So because I was always fascinated by the personality of Gandhi, and also the kind of complexity as a fragile, small, as the way when you look at Gandhi, and the importance he holds in terms of our democracy and the status of Indian constituency and everything. So जब मैं चाइना गया तो then I was, before I went, when I had a trip to China, I had this made work called Raise Your Hands Those Who Have Touched Him. That was about Gandhi. वो ये था जो मैं लोगों से ये पूछ रहे थे, जो भी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं या आसपास में, तो जो गांधी जी को देखा हुआ है, जो उनसे या उनके साथ कोई फिजिकल इंटरेक्शन हुआ है, उनसे बातचीत करके एक वीडियो बनाना था. तो वो उसमें मैं काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया. नियर अबाउट 18 लोग मेरे को मिला. उन सबसे मैं उनका घर जाके इंटरव्यू किया. बहुत डिटेल, मतलब डीप लेवल पे कॉन्वर्सेशन किया. तो वो सारे मिला के मैंने एक वीडियो किया था. सो व्हेन दिस इन्विटेशन केम अबाउट फ्रॉम द चाइना शो, then I also thought, father of nation for China is Mao, and also we know that there is these two different, as you said, Vijara Thara, where you won't actually see that you can't put Gandhi and Mao at the same plate at any context. And in terms of also in terms of the historical period, because they probably had a little bit of time differences as well. So when I started thinking about this project, and also then I started observing the archival images of Mao and Gandhi. So that is where one thing struck me very interestingly. But basically the project is not about making a lot of work around it. It was all about looking at archival images and making connections. So it almost, it took almost 3 months for me to make these connections, where I found in one thing very interesting is that the way
you look at the archival images of Gandhi and Mao, and I mean, it could be true for many other countries as well. It's not, I'm not saying that this is my invention in this area. So what you see that, the frame in which the portraits are or the photographs are taken, and this is a historical document. It was taken in the historical time frame. तो वो framing का वो, even though the events are different and situations are different, वो framing मेरे को एक जैसे लगा. So that was the finding which I was quite keen on. तो उसमें मेरे को लगा ये ऐसा है जैसे, and then I found similarities about cultural evolution, Quit India and Long March, Dandi March. और जो ये बातें आप कह रहे हैं, हम अपने देखने वालों को यहाँ इस वीडियो आर्ट को दिखाना चाहेंगे जिसमें गांधी और माओ से तुंग दोनों अगल बगल फ्रेमों में रखे हुए हैं और जिस सिमिलैरिटी की बात जीजी यहाँ कर रहे हैं.
जी हाँ, आप बता रहे थे कि हाँ। Yeah. So then this was kind of I mean I mean obviously when you make something like this you also equally get excited about that process. So that was quite revealing and it's also anyone who I mean I started sharing with these documents and they also find exactly the same. Because then because you never think in that terms that you can kind of bring these two people together. Therefore it was quite interesting. Maybe when I started off मेरे को ये लगा था इन दोनों का जो दोनों कितने अलग है वो दिखाने के लिए मैं दोनों को सामने लेके आया, लेकिन वो फ्रेमिंग है जिन्होंने उसको देखा है वो क्लिक किया है उसका विचारधारा शायद कितना सिमिलर था, इवन दो these two are too different, but whoever is looked at them were so similar the way they were portraying them. This was something quite interesting for me. अच्छा, इसके बाद फिर आप और किस वीडियो आर्ट की बात करना चाहेंगे? इसके बाद मैंने this another very interesting intervention I did. This was in 2011 Venice Biennale. India had a pavilion, so I was one of the artists representing from the country. So Ranjit Hoskote curated the show. So I had made an elevator which was titled Elevator from the Subcontinent. तो उसमें ये था इट वाज अ थोड़ा लार्जर दैन लाइफ साइज जो नॉर्मल एलिवेटर से थोड़ा बड़ा एक एलिवेटर मैंने कंस्ट्रक्ट करवाया. तो उसका व्हेन यू गो इनसाइड द एलिवेटर देयर इज अदर 3 sides ऑफ इट वेयर कवर्ड विथ बैकलिट प्रोजेक्शन. बैकलिट प्रोजेक्शन पता नहीं सबको पता चल जाएगा, मे बी some images would actually will show what exactly it is. So थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है. तो ऐसा है तो अंदर जाके आपको लगेगा आप एलिवेटर के अंदर है, लेकिन जो बाहर जो प्रोजेक्शन के वजह से तो आप उसको एक कमरा जैसे दिखाई देगा. वो कमरे में तो आप जैसे आप एंटर करके आप एक पार्किंग स्पेस में है, चारों तरफ आपको कार्स दिखाई देगा. देन बिकॉज इट इज़ अ visual thing, then it goes down. It is a video which is actually projected from backside. So what happens that when you see when you look at it and you feel it, you see that you are actually going up. तो पार्किंग लॉट से आप ऊपर जा रहे हैं, तो बीच में जो फिलेट्स है देर आर अलग अलग टाइप का जो टेक्सचर दीवारें हैं, उसके आप ऊपर जाके दूसरे जगह पे एलिवेटर रुकेगा. then you will see another house जो एक जो ड्राइंग रूम है घर का. तो ऐसे तो आप ऊपर जाते जाके बिकॉज यू फील लाइक यू आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वीडियो, बिकॉज अदरवाइज आपका जो एलिवेटर है वो स्टैटिक है. तो ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं, अलग अलग फ्लोर के थ्रू आप ट्रैवल करोगे. देन यू गो टू द टॉप वेयर यू सी द होल सिटी.
then this elevator goes completely down. It's almost like a fall. But the whole point is that, you know, each time when you are inside the elevator, you feel like you are actually ascending, and when you go down, you feel like you're going down, because वो जो experience को आप कहीं ना कहीं से रुक नहीं सकता, because आपका सामने जो back side है वहाँ पे तो door है. If you are not looking back, you are always stuck into that small space. तो इसके थ्रू मैंने क्या किया है, तो जो अलग अलग जो रूम्स जो इंटीरियर्स में जो आप जा रहे हैं, these are all different households of different maybe economic background. जैसे both lower strata का जो one room houses है, ऊपर जाके थोड़ा मिडिल क्लास वाला हाउसेस है, थोड़ा अपर मिडिल क्लास वाला स्ट्रक्चर्स है. ऐसे ऐसे अलग अलग हाउस होल्ड इंटीरियर से एक जर्नी है. वो एक जगह पे नीचे जाके बेसमेंट में स्टक हो जाता है, देन इट कम्स अप, देन दोबारा वो पार्किंग लॉट में आके एलिवेटर ऑटोमेटिकली खोल जाता है. तो दिस इज़ अबाउट 10 मिनट्स लॉन्ग ड्राइव.
सो इन ए वे मेरा आइडिया तो ये था, बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टिल इमेजेस यूज़ करके बनाए, एंड दिस वॉज ऑल्सो, आई मीन आई वॉज काइंड ऑफ कनेक्टिंग विथ मैनी पीपल, जिसका घर के अंदर मैं जा सकता हूँ, फ़ोटो खींच सकता हूँ, वैसे लोगों से कनेक्ट करके मैंने बनाया। एंड इट ऑल्सो देन शोज लाइक, जैसे आप एक एलिवेटर को कंसिडर करेगा तो इट हैज़ अ वर्टिकल स्ट्रक्चर। अब एलिवेटर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आपका एक जो जर्नी है इट इज़ ऑलवेज इधर अप और डाउन, तो एलिवेटर का स्ट्रक्चर वो है, उस स्ट्रक्चर इटसेल्फ विल टेल यू दैट यू नो इधर यू कैन गो अप और डाउन, दिस इज़ लाइक अ कॉर्पोरेट लैडर, जिसमें आप एक ही जैसे जा सकते हैं। तो व्हाट मेरा इंटेंशन ये था, जो जब आप साइड में ट्रांसलूसेंट जो साइड में जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, तो आप एक दूसरा नज़रिया आपको सामने से एक पैरेलल व्यू भी मिल रहे हैं, जिसके थ्रू एलिवेटर के आप साइड से तो आप बाहर देख पा रहे हैं। तो दैट वाज लाइक, इवन फॉर मी इट वाज लाइक शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स, जैसे आप एलिवेटर के अंदर भी आप ये साइड देख सकोगे, इसका मतलब एक पैरेलल व्यू भी आपको मिलते जाएंगे। तो दिस वाज माय इंटेंशन व्हेन आई वाज मेकिंग इट। और अगर आपके वो जो प्रिज्म ऑफ परसेप्शन की बात करें, तो हम यहाँ वो बहुत दिलचस्प वीडियो यहाँ अपने देखने वालों को दिखाना चाहेंगे, और फिर जीजी से ये पूछना चाहेंगे कि इस आर्ट के पीछे उनकी सोच क्या थी। Prism of perception, prisms of perception. For me, it's actually all of a sudden what struck me, the slogan when we started off with the incredible India. जैसे एक वो था, it was one of the advertisement about India, which goes off as an invitation for anyone to come to visit India. तो incredible India का जो slogan भी तब शुरू हुआ जब all the multinational corporations have come up, and they also, and India open to the open economy, global economy, and that is where all this has started. So ये जो train, for me it actually has 5 different section के थ्रू ये जा रहे हैं। तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि जो जहाँ पे आप खड़े हैं, जो ट्रेन को देख रहे हैं, उस हिसाब से आपका जो ट्रेन का जो विजन है डिफरेंट होते जा रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट द ट्रेन इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, इट कुड बी फ्रॉम वेयर यू स्टैंड एंड लुकिंग एट, इसलिए तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है। दिस वॉज माई इंटेंशन। सो यू गो बैक टू, यू सी द ओल्ड ट्रेन एट द एंड, so that itself says that जो प्रोग्रेस आप कर रहे हैं वो कहाँ पे खड़े होकर आप प्रोग्रेस को देख रहे हैं, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। एंड इफ़ यू से दैट दिस कंट्री इज़ प्रोग्रेस फॉर एवर, हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे, अगर रूरल इंडिया में खड़े होकर तो हम जो दिल्ली में दिख रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं देगा।
So this was something which I was trying to portray to this particular work. और बताइए इसके बारे में, जो आपके ये दो दरवाज़ों वाला ये काम है वो क्या है? Yeah, that was this was also an invitation for a show, which was called, which was actually about a show curated by Sunil Mehra on magical realism. So magical realism was actually the focus of the show, and he also give us literature for whoever was participating in the show has got different materials for in order to think about what kind of work you are planning to do. तो मैंने वो मैजिकल रियलिज्म का आइडिया को लेके मैंने सोचा, तो मैजिकल रियलिज्म ऑल्सो वर्क्स इन मेनी लेवल्स बिकॉज वो लिटरेचर का एक एरिया है जिसमें आप शायद आप एक डिक्टेटर वाला गवर्नमेंट में रह रहे हैं एंड यू कैंट ओपनली स्पीक अबाउट थिंग्स विच यू रियली वांट टू से because there are restrictions where you are being watched and monitored all the time. So उस सिचुएशन में आप कैसे आपका एक्सप्रेशन को बाहर करोगे, तो तुम अलग अलग सिंबॉलिक वेज के थ्रू आप एक बाहर करोगे, एंड जिसको जानना है वो तो समझ में आता है ये क्या बोल रहे हैं, एंड जिसको नहीं आता वो सिंबॉलिक सेक्शन ऑफ दैट एरियाज, तो उनको तो उनसे ये हटके रहेगा. तो दिस वाज समथिंग विच देन आई थॉट जो पॉलिटिक्स इज समथिंग विच एक्चुअली वर्क्स, एंड मैजिकल रियलिज्म एक्चुअली इवन इन इट्स फर्स्ट एक्सिस्टेंस इट केम बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पावर गेम विच प्लेड थ्रू आउट मेनी पीपल. तो मैंने वो जो इन ए वे रिवर्स्ड होल थिंग एंड पॉलिटिक्स को ले लिया, तो वो मैजिकल रियलिज्म का पेडेस्टल में रख दिया, तो मैंने उसको पॉलिटिकल रियलिज्म टाइटल दिया. तो जो आप दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये है,
डिफरेंट टाइम्स में नियर अबाउट लास्ट 30 और 40 ईयर्स का जो हमारा जो रेजिम शिफ्ट है, क्या क्या दुनिया में हो गया, जो कैसे हमें अफेक्ट किया है, उसका एक छोटा लेवल का रिप्रेजेंटेशन है वो. I mean, I could have gone much further into it, getting all the different times with, working a lot on it. But then that could have been a different thing altogether. इसका एक भी है तो मैंने उसको टाइम भी एक 3 minutes के अंदर रखा है, because I don't want to pump into too much of details in order to make something out of it. So I was kind of referring certain areas, something like the fall of communism in Russia. That was a major thing which actually struck many of us. I mean, in the 80s, that was a major setback for people from Kerala, especially because we all believed in left ideology at that time very strongly. So what I was showing in that particular one is that it happens in a house, in interiors of 2 rooms. So in a way, I was kind of dramatized the whole event which is coming in different times, and as if it is felt through any person who is in their own personal space. और ये जो वीडियो आर्ट का जो काम है, उसकी ड्यूरेशन आइडियली कितनी होती है? It varies. It depends upon what is your theme and what you work on, and mostly I keep it very short. मेरा जो 3, 4, 5 मिनट का अंदर होता है. एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज वीडियो आर्ट का जो ऑडियंस है और उसका जहाँ पे सेटअप करते हैं, बिकॉज मोस्टली वीडियो आर्ट विल बी शोन इन गैलरी स्पेसेस. तो उसमें इट्स नॉट लाइक अ cinema space. It's because you are not inviting people specially to come and sit and see. So this is more like people are walking around looking at different things. हाँ, वो किसी भी point of time पे join करें तो उनको एक experience हो जाता है. So that is one way of doing it. There are also people do it in so many different ways. लोग तो लगातार पूरा 1 दिन या 2 दिन कैमरा एक जगह पे रख के भी शूट करके दिखाते हैं. So it's also then it comes to a performance act. जैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं कुछ, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन अलग हो रहा है, वो आपका एक अलग आर्ट बन जाता है. फाइनली व्हेन यू शो इट डिफरेंट टाइम्स, तो वो परफॉर्मेंस विल बिकम अ वीडियो आर्ट फॉर्म इन डिफरेंट टाइम्स. तो ऐसे तो इसका तो कोई एक लिमिट और एक सेक्शन नहीं है. आई कैन इवन से दैट टू एन एक्सटेंट जो भी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स हैं, वी कैन कंसिडर देम एज वीडियो आर्ट. आई मीन इट्स नॉट बिकॉज मेरे हिसाब से जो मेजर डिफरेंस बिटवीन अ फिल्म मेकिंग प्रोसेस एंड अ वीडियो आर्ट, वीडियो इज़ मच मोर क्लोज टू योर हैंड. जैसे आप नोट बुक में कुछ डायरी में लिख रहे हैं, उस हिसाब से इफ़ यू हैव अ कैमरा यू कैन मैनेज एंड आइडियाज इंस्टेंटली कम्स. यू यूज़ वीडियो एज अ माध्यमम टू डू दैट. सो बट otherwise you have to have a script and the setup and all kinds of interaction with budget people and so many other things involved in a production for a filmmaking. But but there is no stark demarcation between a video art and any other media based work in that context, because it's a very fluid thing. This is how I see it. और यहीं पर आपकी ये जो रिफ्यूजी सेटलमेंट वाला काम है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे. वो दिस रिफ्यूजी वाला काम दैट वाज टाइटल्ड एक्सपैंडेड, वो मैंने तब किया था जो 2015 में मेरा एक शो हुआ था गैलरी के मोल्ड बॉम्बे में, जिसका फोकस था आर्क. तो आई टाइटल्ड द शो द आर्क, which was in reference to the ark, Noah's ark. जो नोहा के आर्क के बारे में शायद सबको पता होता है. नहीं, आप फिर भी बता दीजिए. तो ये दिस जैसे बाइबल का एक कहानी है जिसमें कहा जाता है लाइक जो द होल वर्ल्ड, जो पॉपुलेशन उस टाइम जो दुनिया में जितने भी लोग रहते थे सब पापी बन गया, तो सब तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में लग गया. तो गॉड ने डिसाइड किया सबको ख़त्म करने के लिए. तो एक बंदा को चुना गया, तो वो थोड़ा ठीक ठाक था. उसको कहा तो आप हर एक जानवर का एक पैर को लेके एक जो एक पैटर्न बना दो, एक बॉक्स बना दो,
जिसके अंदर सब आके दिस मोर लाइक ए रेफ्यूज प्लेस टू रेस्क्यू एंड मैं सब पूरा वर्ल्ड को ख़त्म कर रहे हैं बाय सेंडिंग रेन फॉर 40 days and 40 nights। तो ये तो नोहा ने एक आर्क बनाया जिसके अंदर सारे जानवर को आर्क को हम कैसे समझें? आर्क इज हाउ डू वी से इट इन बोट तो मे बी बोट इज़ नॉट द राइट फॉर्म बिकॉज ओबियसली वो पानी में तैरने के लिए तो बनाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था वो सेल करके कहीं जाना है। ये इतने लोगों को, इतना जो स्पीशीज़ को बचाना था ताकि बाकी सबको ख़त्म कर रहे, उसके बाद एक नया शुरुआत करवाना था। दैट वाज द इंटेंशन। तो मैंने ये आइडिया कुछ आज का टाइम के लिए लिया है। तो मैंने सोचा ये क्या क्या है, बिकॉज हम अभी तो एक डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वेदर गॉड देयर और नॉट, बट हम तो बहुत हाई लेवल पे डिस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे एक टाइम है जहाँ पे तो ये प्रिजर्वेशन जो भी हमारा एक्सिस्टिंग चीज़ है, अगर हम सोचे जाए तो एक 3rd वर्ल्ड वार भी हो जाए, जो क्या बचेगा, और हाउ डू वी प्रिजर्व जो भी हमारा था। तो उस लेवल पे जब देखा जाए तो दैट इज़ वेयर देन यू ऑल्सो थिंक दैट जो डिस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे आपको एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाने का सिचुएशन में आ जाते हैं, दैट इज़ वेयर द ऑल काइंड्स ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस ऑल्सो कम्स इन। तो मैंने जब मैं ये जो आर्क के ऊपर काम करना शुरू किया, दैट इज़ द टाइम व्हेन द सीरियन refugee problems started very hugely, and I mean also that boy on the seashore, a very important photograph which was also came into newspapers, and so all that was happening at that time.
So then I thought, you know, the ark as an idea would also have a major important role to play when you think about a new beginning or moving the whole, you know, it's almost like, you know, flooding from one place to another and moving from one place to another for your own existence, your own survival. So that उसमें मैंने ये expanded काम किया, जिसका idea ये था, तो मैं I was searching through the net to find out refugee camps exist in many parts of the world. तो उसका जो file shots है और photographs है and archival images of that was that because refugees are, this is a the human crisis which existed from the beginning of the civilization. Whenever we started off as a civilizational, you know, social system, तब से ये शुरू है. तो मैंने वो उसको इसके अंदर जोड़ने का कोशिश किया. That is how expanded काम का शुरुआत हुआ है. और ये जो है शैडो ऑफ क्या, शैडो ऑफ द एंसेस्टर्स, ये क्या है? शैडो ऑफ द एंसेस्टर्स में उसी का ही द सेम शो में वो भी काम था, जिसमें एक वुडन लॉग दिखाया मैंने. इट्स ए पीस ऑफ वुड and which obviously a chopped piece of wood, and it also represent a tree, and then it also represent any of the natural element which you actually which is essential part of your life. But हम अपने वो natural elements को ऐसे तो part लेके नहीं treat करता. जब भी हम कोई भी चीज़, even nature को we don't treat the way we have to treat them. Treat the nature. So इसमें क्या होगा, जो लोग में से एक shadow निकल रहे हैं, वो shadow is it's a building complex. It's a flat, an apartment complex has come out of the shadow from the log. So which in a way represents that, you know, how we look at nature in order to, for our own consumption.
So then you know then that shadow rolls over to the wooden piece, and it has become an existence of, you know, then the light comes in and out. So it's more like an apartment dwelling happens from that wood log. So it also in a way says that, you know, the way you look at things, you always have your own तुम्हारा मतलब से तो तुम बाकी चीज को देखते हैं. And if you don't look at a tree as for a tree and nature for whatever reason, so other than your own benefit, you know, what you can get out of it. तो जीजी, ये करीब करीब हमारे पास वक्त की भी थोड़ी कमी होती है, और हम समझते हैं कि जिस एरिया में मुझे दिलचस्पी थी आपके काम में, उस पर हम लोग करीब करीब बातें पूरी कर चुके हैं. एक लाइटर नोट पर हम आपसे पूछें कि आपके नाम का क्या मतलब है. ये बताइए. बहुत सारे लोग मेरे से, that is something which I always face in especially in North India. जीजी तो वो कहते हैं एडिंग रिस्पेक्ट है. कई लोग पूछते हैं जी हाँ आगे बोल, नाम क्या है. वो इनिशियल सोचते हैं. So for me, I know this Gigi name was a kind of a fashionable name in the 70s. Maybe my sister overheard it from somewhere when she was 2.5 years old, and she kind of suggested to my parents, इसको ये नाम करके बुलाओ. And it was like, you know, it has no gender specification. So you could also find Gigi Mol and Gigi Mon, both, you know, boy and girl in the same name. And Scaria is my father's name. But then I came to know later that, you know, when I was in Italy, that Gigi is a short form of Luigi in their context. And they, you know, most of them were asking, you know, how come you have an Italian name? So there is no connection, but it is very coincidental. I thought, you know, that was like so this name for me has no meaning. ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की लीनिएज में होते हैं ये दोनों, really इवन जीजी भी और स्कारिया भी? Scaria is, of course, it's a biblical name. Scaria could be the father of John the Baptist. So there is a record to Scaria. But the Gigi is not. Gigi is not. Gigi, I have to struggle to make that name with meaning. तो जीजी, हम समझते हैं कि हमारे देखने वालों ने जो भी आपकी बातें सुनी हैं, उनमें से खुद मुझे ही, क्योंकि आर्ट एक अपने आप में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एरिया है जिसमें बहुत कुछ आपको अपने समय और अपने मन के साथ होने वाली जो एक कश्मकश है उसके साथ निकल कर आने वाली बात है. तो आर्ट अपने आप में एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, उस पर की जाने वाली बातें भी बहुत आपकी तरफ से दिलचस्प थी. हम समझते हैं कि हमारे देखने वालों ने इससे बहुत फ़ायदा उठाया होगा. आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहते हों तो आप कह सकते हैं. Thank you very much, Irfan, and I'm so happy to meet you. Also, I was so surprised to, see you at my doorstep. This is something which I was not expected, and I was very happy having this conversation with you, and hope लोगों को कुछ इससे मिल जाए. Otherwise, obviously it's always a tough task to talk about one aspect of art. हाँ, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हमारे देखने वालों ने जो आपका काम देखा, हाँ, वो काम ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है, और इसी बहाने कुछ और दिलचस्पी आपके काम में और इस तरह के कलाकर्म में लोगों की बढ़ेगी. बहुत बहुत शुक्रिया जीजी. थैंक यू वेरी मच. ये थे जाने माने कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट जीजी स्कारिया. गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर.